में आना बहुत जरूरी है। जिसको ग्राफ के एप्लीकेशन समझ में आने हैं उसको वेटेड ग्राफ और डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ पता होने चाहिए। सो हियर वी हैव रिटन अ डेफिनेशन। ए डायवेटेड ग्राफ क्या है? वेटेड ग्राफ वो है जहां पर ग्राफ एजेस हैविंग अ वेट्स एसोसिएटेड विद देम, द वेट रिप्रेजेंट some value, probably the distance between two city, resistance between two points, and etc etc. Directed weighted graph, the graph edges have got direction as well as weights. अब क्वेश्चन पूछो सर ग्राफ कहां पर यूज होते हैं? नाउ दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ। द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ अ ग्राफ आई एम सेइंग इज लाइक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सर वाई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? मैंने कहा ना आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, तो मुझको इलेक्ट्रॉनिक्स याद आता रहता है। टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक के जो सर्किट सिमुलेशन वाले सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक के जो सर्किट सिमुलेशन के जो सॉफ्टवेयर है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच और पी स्पाइस और लाइक प्रोटस, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, आई एम वेरी श्योर। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो सिमुलेशन सर्किट सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर है, दो सर्किट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर दे आर इंटरनली यूजिंग अ ग्राफ थियरी। They are internally using graph theory. Even for that sake, MATLAB that will also do. Have a look at this. Graph theory कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ. Suppose that this is a kind of a electronic circuit. We have got a electronic circuit making something like this. I hope you are able to see something like this. Oh, this is a kind of a circuit that I am trying to build in. चलिए ये मैंने सर्किट यहाँ पर बिल्ड कर दिया है. If you have built this kind of circuit, see it carefully. If you are trying to build this kind of circuit, now in this particular circuit there are like a different points. Oh, I'm able to see that यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है. अगर मैं अगर ये जो सर्किट सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सर्किट सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर अगर आप लोग चाहो तो वो आपको बता सकते हैं व्हाट इज द वोल्टेज एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द वोल्टेज एट दिस पॉइंट गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दिस वैल्यूज. तो सर ये वो कैसे कर पाते हैं? ऑब्वियसली फॉर दैट ऑब्वियसली फॉर दैट ऑल दे आर डूइंग इज नथिंग बट आपके जो जो अलग अलग रजिस्टर्स है, रजिस्टर्स वैल्यूज, please note the resistor values, these resistor values are considered as, yes, node theory, network theorem, everything. I'm saying that now आपका जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज और ग्राफ थियरी का नॉलेज, that is like clubbed together, that is clubbed together to tell you what is the voltage at that particular point. तो यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल पॉइंट्स आपको दिख रहा है दे आर लाइक नोड्स, और बीच में जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है दैट रेजिस्टेंस यू कैन कंसिडर इट एज रेजिस्टेंस, यू कैन कंसिडर एज द एजेस, वेट्स, आपके एजेस के वेट. सो यहाँ पर एक का वेट है 10 के, दूसरे का वेट है 10 के, तीसरे का वेट है 20 के, चौथे का वेट है 40 के. तो ये 40 के ये उसके वेट्स है, जो कनेक्टिंग पॉइंट्स है उसके वेट्स, रेजिस्टेंस. सो दिस इज व्हाट एंड बेस्ड ऑन दैट एंड प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स कंसेप्ट दे आर एबल टू टेल यू कि कौन से पॉइंट पे कितना वोल्टेज होगा या कहां से कहां पर कितना करंट फ्लो होगा. Okay, that is good. You talk about like a second another favorite example, like social media. A social media where you find that we have got a concept of kya, we have got a concept of like doing friendship. So you just make a friend request on a Facebook, you make a request on a friend request on a Facebook, and then you are friend with someone. कोई मुझको बताएगा ये फेसबुक के ऊपर जो फ्रेंड होता है ये वेटेड ग्राफ होता है या नॉन वेटेड ग्राफ होता है? फेसबुक में ये जो फ्रेंड होता है ये वेटेड ग्राफ होता है, नॉन वेटेड ग्राफ होता है? नॉन वेटेड होता है. इसका मतलब आप लोग ठीक से फेसबुक करते नहीं हो. You should have done Facebook in a better way. Go back and check it. So Facebook में हम लोग जो हमारे फ्रेंड्स है उनको आप लोग कैटेगराइज कर सकते हो. You can make them, mark them as a family. You can mark them as a close friends. You can mark them as like acquaintance and something like that. और तो उसका फर्क क्या पड़ता है? उसका फर्क क्या पड़ता है? उसका फर्क ये पड़ता है कि जो आपके फैमिली के लोग होंगे उनका उनके जो न्यूज़ेस है, उनके जो पोस्ट है वो पोस्ट आपको ऊपर दिखते हैं, और जो एक्वेंटेंस वाले लोग हैं उनके पोस्ट आपको नीचे दिखते हैं. ऑब्वियसली अगर आप उसको मार्क नहीं करते कि कौन सा फैमिली कौन सा क्या है, इन दैट केस यू माइट से दैट इट इज लाइक अ नॉन वेटेड ग्राफ. बट सिंस हम लोग उसको मार्क कर रहे हैं, हम लोग उसको कुछ ना कुछ प्रायोरिटी दे रहे हैं, सो दिस इज पॉसिबल एज लाइक अ वेटेड ग्राफ. कंटिन्यू फर्दर. if we also got communication network, आई एम वेरी श्योर यू आर फ्रॉम द लाइक बहुत सारे लोग ईएनटीसी बैकग्राउंड से.
communication network, I'm talking about that. So communication of like a variety of ways, different ways. हम लोग नॉर्मल आपका टीसीपी आईपी का जो नेटवर्क है, आप लोग उसको भी कंसिडर कर सकते हो, जहां पर मल्टीपल जगह पे राउटर्स लगाए जाते हैं, एंड थ्रू द राउटर्स दैट वी आर कनेक्टिंग, थ्रू द राउटर्स दैट वी आर कनेक्टिंग, मोबाइल सेल्युलर नेटवर्क जो होता है, सो यू नो योर सिग्नल्स आर पास फ्रॉम द वन स्टेशन टू द अनदर स्टेशन, दैट स्टेशन टू द अनदर स्टेशन, एंड देन यू आर एबल टू मेक काइंड ऑफ फोन कॉल्स. अगेन इट इज लाइक अ कम्युनिकेशन नेटवर्क. तो टावर कहाँ पर फिट करना चाहिए, कौन से एरिया में आना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ यू नो उसके जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उसके जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, दो सॉफ्टवेयर्स आर इंटरनली यूजिंग ग्राफ थ्योरी. एनीवे, रोड नेटवर्क, road network, or you can say train network, whatever you say. तो यहाँ पर multiple cities are there and the cities are connected to each other by the roads. तो कौन से रोड का डिस्टेंस कितना है, क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि मुझको कहाँ से कहाँ पर जाना चाहिए. You ever heard of a website like you know Make My Trip or thomascook.com? What is that? thomascook.com or Make My Trip? You know ये लोग क्या करते हैं, ये आपको पूछते हैं कि आपको आपको कौन कौन से सिटीज विजिट करने हैं, कौन से डेट से कौन से डेट तक आपको ट्रैवल करना है, probably, and then what is your budget. Now based on that budget and everything, they try to create a optimized plan for you. सर ये वो लोग प्लान कैसे बनाते हैं कि आप यहाँ से शुरू करो, फिर यहाँ से यहाँ पर जाना, फिर यहाँ से यहाँ पर जाना, ऑन व्हाट बेसिस दैट दे आर मेकिंग अ प्लान. बिकॉज अगेन दे आर इंटरनल यूजिंग ग्राफ थ्योरी एंड दे आर अप्लाइंग एल्गोरिदम कि कहाँ से कहाँ पर जाएंगे, कहाँ से कहाँ पर हम लोग मिनिमम टाइम में जाएंगे, तो ये मुझको ज्यादा बेटर आउटपुट दे पाएगा. Correct. And then once you confirm that, then they do the necessary hotel bookings or like travel booking and etc etc. तो वो जो उनको पता कैसे चलता है कि इस सिटी से इस सिटी में जाने में के लिए कितना टाइम लगेगा. अगेन दे आर यूजिंग द डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो कुछ भी उन्होंने अभी तक वो डेटा गैदर किया हुआ है, सो दैट इंफॉर्मेशन इज फीड इनटू देयर ग्राफ नेटवर्क डेटाबेस में, ये सब कुछ उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है. यू कंटिन्यू फर्दर, you continue further, we have got like a flight, train, or bus services. We have got flights, we have got trains, we have got like a bus services. So flights, trains, or bus services, that is again uh, उनके fares कितने हैं, उनका timings क्या है, again all that particular whole information can be stored in form of a graph, so that you can find out the optimal way to reach from one city to another city. That is possible. Not only that, you find that the biological or chemical experiments. So biological or chemical experiment. So when two chemicals are clubbed together, where two chemicals are clubbed together, they are going to release the energy or they are going to probably absorb the energy. So जो आपका chemical reaction होता है, again उसके लिए भी लोग ग्राफ थ्योरी बिहाइंड द सीन यूज करते हैं. ये वापस से जो उसको केमिकल रिएक्शन के जितने सारे सॉफ्टवेयर्स है, वापस से दो सॉफ्टवेयर्स आर अगेन यूजिंग योर ग्राफ थ्योरी वेरी हेवीली. सेम थिंग सिमिलर फॉर द बायोलॉजिकल, द डीएनए एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल दैट. वहां पर भी अभी ये जो आपको पता होगा वैक्सीन वगैरह जो बन रहा है, सो डू यू बिलीव दैट डायरेक्टली वैक्सीन का ट्रायल होता है? कभी नहीं होता है. बिफोर दैट उसका सिमुलेशन होता है, और वो जो सिमुलेशन होता है वो पहले सॉफ्टवेयर के ऊपर किया जाता है. सो बड़े बड़े जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, दे गेट सम आइडिया, एंड देन ऑब्वियसली देन दे प्रोसीड ऑन टू द फर्दर स्टेजेस, कि इसका रिएक्शन कैसे हो रहा है, कितने टाइम में रिएक्ट कर रहा है, इसके क्या आगे जाके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, एंड एक्सेट्रा दैट यू गेट टू नो दैट. नॉट ओनली दैट, डीप लर्निंग, डीप लर्निंग, ये आजकल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब कुछ चल रहा है. सो डीप लर्निंग, यू फाइंड दैट द न्यूरल नेटवर्क और लाइक न्यूरल नेटवर्क और टेंसर फ्लो, these are the best examples जो internally they are heavily using the graph theory. ये complete neural network is like completely made on a graph theory. Even the TensorFlow is completely made on a graph theory. So TensorFlow is Google's library for the this kind of deep learning and all that. The neural network, TensorFlow, ये सब कुछ graph theory के ऊपर dependent है. Obviously वो जिन लोगों को, टू बी फ्रैंक, जिनको न्यूरल नेटवर्क प्रोग्रामेटिकली यूज करना है, पाइथन से यूज करना है, उन लोगों को एज सच कोई जरूरत नहीं पड़ती है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट, उनको एज सच कोई जरूरत नहीं पड़ती है. बट यू टॉक अबाउट लाइक अदर वंस यू विल फाइंड दैट कि जो लोग एक्चुअली ये न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, जो लोग पाइथन की लाइब्रेरी खुद से बनाते हैं, या फिर गूगल के वो लोग जो लोग टेंसर फ्लो बनाते हैं, नाउ दीज आर द एक्सपर्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. यूज करने वाले को कोई अकल नहीं लगती, यूज करने वाला सिर्फ फंक्शन कॉल करता है और उसको लगता है कि उसको भी मशीन लर्निंग आ गया करके. नॉनसेंस. एनीवे, हाँ मैं कहाँ पर था. अदर देन दैट, जैसे हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं, मैंने शायद आपको नो सिक्वल डेटाबेसेस आपने शायद पढ़े.
NoSQL डेटाबेस के कैटेगरीज आपने सुने थे कि देर आर लाइक डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड, देयर इज अ कॉलम ओरिएंटेड, देयर इज अ ग्राफ ओरिएंटेड एंड देयर इज अ की वैल्यू पेयर। वो जो ग्राफ ओरिएंटेड डेटाबेसेस थे लाइक Neo4j, दिस इज वन मोर कि जहां पर ग्राफ थियरी इज हेवीली यूज्ड। ये Neo4j काइंड ऑफ एप्लीकेशंस है जिनके अंदर डिक्शनरी एल्गोरिथम, पेज रैंक एल्गोरिथम, जितने सारे ग्राफ के एल्गोरिथम्स हैं, दे आर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड। तो सर अगर ये सब कुछ ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? मैं फिर से बता रहा हूँ कि कंपनी में जाने के बाद में ऐसा नहीं है कि मुझको हर रोज डिक्शनरी एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको एल्गोरिथम पता होना चाहिए, वो कौन से सिनारियो में चलता है ये पता होना चाहिए, कौन से सिनारियो में ये फेल होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। करेक्ट। सो Neo4j में रेडीमेड डिक्शनरी का फंक्शन है, लेकिन रेडीमेड डिक्शनरी का फंक्शन वो लोग यूज कर पाएंगे जिनको ये पता है कि वो कहाँ पर यूज किया जा सकता है और वो कहाँ पर नहीं यूज किया जा सकता। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस, या फिर व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और कौन से सिनारियो के लिए वो बनाया गया है। तो नाउ दीज कंसेप्ट्स आर एक्चुअली मोर प्रोमिनेंट व्हेन इट कम डाउन टू द कंपनी। कंपनी में जाके जब लोग काम करना चालू करते हो, इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको डिक्शनरी का एल्गोरिथम पता होना चाहिए, आपको उसके कंसेप्ट पता होने चाहिए, आपको उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, आपको उसकी लिमिटेशंस पता होने चाहिए। इतना पता है देन इट इज मोर देन सफिशिएंट, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन एल्गोरिथम, क्योंकि वैसे भी रेडीमेड एल्गोरिथम मिल ही जाते हैं, रेडीमेड एल्गोरिथम मिल ही जाते हैं। सो मेनी ऑफ द प्लेसेस, मेनी ऑफ द ग्राफ लाइब्रेरीज आर अवेलेबल जिन्होंने ये इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है, राइट। There are few more types of graphs, but what we'll do is that it is already 11 o'clock. We will do one thing. We'll take a break first, and after the break, we'll quickly finish the connected graph क्या है, complete graph क्या है, bipartite graph क्या है, और ये spanning tree क्या है। ये concept खत्म हो जाता है, then we can start on an actual practical कि adjacency matrix कैसे करना है और क्या बनाना है। अगेन आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको बेसिक ग्राफ इंप्लीमेंट करने नहीं आता है, बेसिक ग्राफ का अगर आपको प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता है, देर इज नो पॉइंट इन अटेंडिंग द डिक्स्ट्रास लेक्चर। सो डिक्स्ट्रा क्रुस्कल एल्गोरिथम से मैं क्रुस्कल एल्गोरिथम समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश भी मत करना। क्योंकि अगर आपको बेसिक एडजेसेंसी मैट्रिक्स अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, अगर आपको वो बेसिक फ्लो ही समझ में नहीं आ रहा है, तो आगे वाले एडवांस एल्गोरिथम आप लोग सिर्फ थियरी सुन सकते हो। डूइंग अ प्रैक्टिकल और इवन डूइंग पेपर वर्क will become a tough job for you. So please pay attention. We'll take a break, and after the break, we'll take a look at that one or two graph types. We'll finish up with that, and we will begin with the actual implementation, actual practical. Right? Meanwhile, you have any question? Please post. So far, I just told you that what is graph concepts as such, basic concept. Let us take a look at some of the types of graph first. So once we understood types of graphs, we can, we will be able to see it, the actual implementation. So the first concept, connected graph. What is a connect graph? Connected graph. From each vertex, some path exists to every other vertex. Every other vertex. And in other words, you can traverse entire graph starting from any point. You take a look at this and you see this. Is it a connected graph? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट एज होना चाहिए, आई एम नॉट ऑन डायरेक्ट एज, आई एम सेइंग दैट फ्रॉम वन पॉइंट you should be able to go to the any other point, not necessarily directly but even indirectly. Is it a connected graph? Yes, it is a connected graph. What about this? Is it a connected graph? Is it a connected graph? Can you go from A to E? Is it possible? No, I cannot go from A to E. That is not possible. So I'm saying that this graph is kind of disconnected graph. This graph is a disconnected graph, and this graph that you see is this graph is a connected graph. This is a connected graph. Okay, that is good. Going ahead, what is a complete graph? Now complete graph is like kind of super connected. Each vertex in a graph is adjacent to every other vertex. Each vertex is adjacent to every other vertex. So you take a look at this. This is Happy Christmas. Okay, sorry, not Christmas. Like we have got like a total 5 vertices, and 5 vertices. We are there is a direct edge from one vertex to every other vertex. So A vertex to B vertex, A vertex to C vertex, A vertex to D vertex, A vertex to E vertex. So from every vertex, there's a direct edge
to every other vertex, and that is the reason this is said to be the complete graph. By the way, how many edges are there? आप लोग नोट कर रहे हो, ए से निकलने वाले 4 एजेस, बी से निकलने वाले 4 एजेस, सी से निकलने वाले 4 एजेस, डी से निकलने वाले 4 एजेस, ई से निकलने वाले 4 एजेस. So you can find out that कि total 5 vertices are there, like 4 edges. But रुको, is it directed graph? It's like undirected graph. And since it is undirected graph, एक एज आपको दो बार काउंट नहीं करना है. एक एज आपको दो बार काउंट नहीं करना है. You can have, let's say, divide by 2, and then divide by 2, you can say that there are 10 edges. हो सके तो काउंट करके देखना. So you will be able to confirm that yes, there are 10 edges when there are 5 vertices. Because ये divide by 2 क्यों किया? क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ था. अगर डायरेक्टेड ग्राफ होता तब आपको डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं पड़ती. डायरेक्टेड ग्राफ होता तो ये डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं पड़ती. So you find that it is undirected graph. The number of edges is n into n minus 1 by 2, while directed graph it is simply n into n minus 1. Again ये exam के question आते हैं कि like for example I have got a graph with the complete graph with the 10 vertices. Complete graph with the 10 vertices. How many edges are there? अब वहां पर जाके ड्रॉ मत करते बैठना कि 10 vertices के edges कितने होंगे करके. So that will be too much. जस्ट गो अहेड एंड फॉलो द फॉर्मूला. अब वो डायरेक्टेड पूछा गया है तो डायरेक्टेड का फॉर्मूला फॉलो करो, अनडायरेक्टेड पूछा गया है तो अनडायरेक्टेड का फॉर्मूला फॉलो करो. इट इज देयर. नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन वी आर सेइंग इट्स अ bipartite graph. What is bipartite graph? What is bipartite graph? I'm saying that the vertices can be divided into two disjoint set. A disjoint set का मतलब होता है the set which are independent of each other, set which are not having any कॉमन एलिमेंट. इसका इंटरसेक्शन जिसका जीरो है, जिसका इंटरसेक्शन नल है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. तो ऐसे दो पार्ट्स में आप लोग डिवाइड कर रहे हो. द वर्टाइसेस इन फर्स्ट सेट आर कनेक्टेड टू वर्टाइसेस इन अ सेकंड सेट, बट वर्टाइसेस इन अ सेट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर. सर नहीं समझा. हैव अ लुक एट द एग्जांपल ओवर हियर. द एग्जांपल ओवर हियर इज सेइंग दैट x is connected, right? Just a minute, something went wrong with this. One minute. Not really. Yes. Fine. Now you take a look at this. Consider that X, Y, Z. These are, let's say, three toys. These are three toys, and RGB. These are three colors: red color, green color, blue color. What I'm trying to tell you is that the X toy is available into two colors. Y toy is available only in one color, and Z toy that is available in all three colors. All three colors. Now such kind of graph, अगर आप लोग ठीक से नोट करते हो, this is your one set, this is your second set. अब यहाँ पर x, y और z इसका कनेक्टिविटी नहीं है, r, g और b इसका कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ जब कनेक्टेड होते हैं, such kind of graph is said to be the bipartite graph. Such kind of graph is said to be the bipartite graph. I hope this is clear. इसको हम लोग कहते हैं bipartite graph. आगे जाके हमें एक प्रोग्राम देखना है कि how do you check whether the graph is bipartite or not, right? तो इसके लिए bipartite graph आपको पता होना चाहिए. Then you continue further. And the last piece of concepts